Are you building your house, renovating it, or redoing your floors and don't want to waste your money? You better watch this video. Hello and welcome to Wood.pk. आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो कि अगर आपके साथ नहीं हुई तो अच्छी बात है, और अगर होने वाली है तो ये वीडियो आपको उस चीज़ से प्रिवेंट करेगी. So we got a call from a client and he shared some pictures with us. It was of a perfectly good Oakwood floor. He was very happy with it initially. 2 weeks after the floor was installed, the client calls us, shows us the video. All the floor is buckled up. As you can see, apparently what we thought, आप भी जो सोच रहे हैं कि एक्सपेंशन गैप सही नहीं दिया था, इसलिए फ्लोर जो है वो थोड़ा सा फैल के it touched the wall and it pushed the wall, और जहाँ से जॉइंट था it swelled up from there. और इसी तरह की जो स्कर्टिंग थी वो भी हार्डवुड की है, वो भी बाहर निकल आई. This is what we thought as well. But to our surprise, when we went over there, we saw excessive humidity coming out of the edges. तो थोड़ा बहुत हम उसको try out कर देंगे, it will be fine and then we'll reinstall it. When we removed the floor, the client had used plywood. It was 1/2 inch plywood placed on a freshly poured concrete floor. Freshly poured concrete floor, जिसको 2 हफ्ते हुए थे. It wasn't given ample time to dry out. That's why the mold came up from the concrete floor. जब आप एक फ्लोर को ड्राई नहीं होने दोगे और उसके ऊपर प्लाईवुड रख के उसको मॉइस्चर ट्रैप कर दोगे, मॉइस्चर कहाँ जाएगा? So this is what happened. We spoke to the installers. Installers said कि जी ड्राई था जब हमने लगाया था. हमने तो जब लगाया था तब तो बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन कम से कम ये पूछ रहे थे कि जो आपने सीमेंट का फ्लोर लगाया इसको कितना टाइम हुआ है. फॉर एवरी इंच ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोर यू पोर, यू नीड टू गिव इट एटलीस्ट 4 weeks टू ड्राई. एटलीस्ट 4 weeks अंडर नॉर्मल डेज. आजकल चल रहा है monsoon सीजन. सो इन दिस सॉर्ट ऑफ अ रियली ह्यूमिड सीजन, really humid time of the year, you need to give it at least 2 more weeks. यानी कि 6 हफ्ते देने चाहिए थे to have it dried. But what's done is done. Now we'll have to remove all the floor. उसके बाद we'll have to treat the floor with some chemicals to dry it out a bit faster, because the client has to move in. They don't have the time. So the expense of the chemical, the expense of having it removed, reinstalled, this is the added expense for which we have been making this video, to warn you not to have this done when you're making a home. I know it's a bit of a rush at the end. जब आप आखिरी finishes लगा रहे होते हैं, आप दिल करता है आपका कि जल्दी जल्दी सारा काम खत्म हो जाए, because you've had enough by then. इतना खर्चा करके भी अगर आपको दोबारा उसको चीज़ को रीडू करना पड़े, it's a shame. Well, this stands true for walls. This stands true for wall paneling. For wallpaper, this stands true for wood flooring and laminate floor. कोई भी आपका floating floor हो, make sure of 2 things. The subfloor is dry, completely dry, especially if it's concrete. Second, when the installers are bringing the floor to your place, they need to bring it at least 48 hours prior to the installation, because उसकी floor की एक acclimation होती है. Floor की acclimation इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी मटेरियल आप वहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, it's brought to your प्लेस, और जो एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर है, इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, और अगर उसने एक्सपेंड करना हो तो वो एक्सपेंड कर जाता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके प्रायर टू इट्स इंस्टॉलेशन. सो एटलीस्ट 48 hours बिफोर यू गेट एनीथिंग इंस्टॉल्ड, स्पेशली वुड फ्लोरिंग, लैमिनेट फ्लोरिंग, हैव द इंस्टॉलर्स ब्रिंग द बॉक्सेस और ब्रिंग द मटेरियल टू योर साइट. दैट मटेरियल नीड्स टू बी प्लेस्ड प्रेफरेबली इन दैट वेरी रूम जहाँ पर आपने उसको इंस्टॉल करवाना है, और थोड़े थोड़े बॉक्सेस अगर आप खोल दें तो क्या ही बात है. गिव इट 48 hours. ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स आफ्टर यू इंस्टॉल दैट फ्लोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप इट हेल्प्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.